Manisha ji, I think you are mute. Please unmute yourself. Ma'am, you are not audible.
Good morning, everyone. Am I audible? Please let me know. Can you hear me? Yes, ma'am, please. Okay. So I welcome you all to this technical session. Hello. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. You are audible now. Okay, now then we will be starting our session. We have merged two sessions in this morning program, parallel session 1 and parallel session 2. Parallel session 1 is Indian philosophical heritage, and the second panel was ancient Indian history and archaeology. Today, the chairperson of this session will be Professor Renu Shukla, ma'am. She is head of the Department of Ancient History, Culture and Archaeology, Kanya Gurukul Campus, Gurukul Kangri, University, Haridwar, Uttarakhand. You are most welcome, ma'am, to chair this session. And I welcome all the delegates to present your paper. So I'll be calling one by one. So delegates are requested to please take only 10 to 12 minutes to give the summary of your paper. And madam will give the remarks in the end of the paper. Okay. So first participant is Dr. Mayank Shekhar. If Dr. Mayank Shekhar is available there, then please you start with your paper. Mayank Shekhar ji. Mayank Shekhar, I think, is not present right now. Dr. Asha Kumari. डॉक्टर आशा कुमारी, तो जो लोग अभी प्रेजेंट है उनको शुरू करा देते हैं, ठीक है? डॉक्टर रचना शर्मा, डॉक्टर आरबी पांडे, विनय कुमार पटेल, डॉक्टर अशोक, आई डोंट थिंक कोई जुड़े हुए, डॉक्टर विनय, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, you audible. So whosoever is present, please kindly start with your paper. Then we'll wait for the other participants so that they can come and join us. So kindly, any one of you can start your paper first. Yes, ma'am. May I please? Okay, fine. You please introduce yourself and start your paper. Okay, ma'am. Thank you. Good morning to all of you. Myself, Parveen Kumar. Just 1 minute, please. Am I audible? You please introduce yourself. Okay. Myself, Parveen Kumar, Assistant Professor, Chaudhary Devlal University, Sirsa, Haryana. And my paper title is Archaeological Investigation in Kharkhoda Tehsil of Sonipat district, Haryana. May I start, ma'am? Ma'am, may I start my topic? Yes, please go ahead. Okay, I think PPT presentation is not available. You can go with your summary, please. Huh? Okay, ma'am. Actually, this paper is preliminary report of village-to-village exploration of Kharkhoda Tehsil, and it is related with my research topic of my PhD. The study area lies in the southeastern part of Haryana and one of the tehsil of Sonipat district. This area comes under Yamuna river plain. The area is rich in archaeological remains, and the fact it has been proved by the explorations conducted by various scholars like Dr. Silakram, Dr. Brahmdatt, and Dr. Asi Thakran. When I went in, I'm going to drainage system. The area under present study is a part of Yamuna river plain, and it has a poor surface drainage. Due to poor surface drainage and a system of abandoned paleo channel, water table is very high. The general slope of the district is from north to south. The Yamuna river
it's a common boundary of about 49 kilometers between the Sonipat district and Uttar Pradesh state, and present area is a part of Sonipat district. During the course, the river falls in elevation from 218 meters to 209 meters, giving it a very gentle gradient and forms a floodplain. On eastern side of its bed, seepage from the Yamuna River, distributaries and field channel taking off from Bhalot branch are the conditions mainly responsible for the high subsurface water level in the district. In the most of area, waterlogged and partially waterlogged conditions are a rule. So irrigation in the district is mostly done by canals and tube wells. Methodology. Researcher conducted an extensive village-to-village survey in this region. A GPS handset was used to record correct coordination of the site. Paper sampling of the pottery and other remains from the surface and exposed section was done. On the basis of ecological conditions and details analysis of the ancient settlement, different categories of the sites like regional centers, village, industries, centers, and campsites have been identified. The main emphasis was laid on locating sites and on observing the distribution pattern of the cultural remain in the area. The data of site was decided on the basis of occurrence of diagnostic ceramic safe of ancient culture and cultural material discovered from the survey and housed in different museum was analyzed and studied to address the problems. And the available published literature and survey reports, including unpublished dissertation, were examined, and their data was also included in the study. And for this, I make a table of all the site with site name, latitude, longitude, area, previous work, and culture sequence of those sites. And in this area, some important site are as like Harmana, Kundal, Mandori, Nakaloi, and Pipli. In these sites, when I saw a culture sequence, total 2 early Harappan sites as I found, 7 late Harappan sites, 4 PGW sites, 24 historical sites, and 18 sites belongs to medieval period. Not a single site came from mature Harappan site. In the discussion, the antiquity of the study area can be traced back to proto-historic times. Archaeological explorations have revealed that the earliest settler in the region um, belongs to pre-Harappan period, Ghaggar Hakra period, has been reported in the area. But in the adjoining area, a number of sites of late 4th millennium BC has been reported by Rao, by Dangi, and early Harappan periods. Archaeological explorations have revealed that the first settler in this region belongs to early Harappan culture, Soti Siswal culture, in the initial period of the urban phase. Only 2 sites, Parmana and Silana, of the period have been explored in the area under present study. Regarding early Harappan period, the ceramic groups have related with the Sothi Siswal pottery. The main shape of this symbol are jars, vases, bowls, basins, and handle pots, basin. There are difference in size, but the formal features are more or less similar. And in mature Harappan period, archaeological exploration have revealed that not a single sites belongs to this region was not found. In late Harappan period, the second culture related with late Harappan in proto-historic of the region is distinguished by the late Harappan culture of generate phase of urban Harappan. 7 sites yielded the remains of this phase. The classical Harappan shapes like goblet,
purported jar, classical Harappan painting fell out used, but some shapes such as beaker, nail-headed bowl, dishon stand with long steams, etc. Continue with modifications. In painted grey ware during this period, historical period, during the proto-historical period, the late phase is characterized by the advent of the PGW people, the explore yielding 4 PGW sites, the excavation at Sinoli by a book by Amit Rai Jain and Anchal Jain in 2018 was cleared in Bhagwanpura nearby my research area, Madina by Manmohan Kumar, and threw light on relationship between the late Harappan and PGW peoples. And historical and medieval period, 24 sites of the historical period were explored and 18 sites of the medieval period were explored during the survey. Main safe included sharp edge bowl, vases, pots, a few sort of glass were also collecting during the explorations. And in a conclusion, the researchers conducted extensive village to village survey in the region and recorded site with the help of GPS besides size of document and other visual information. This has helped us to correct the earlier recording of the site and their size, recording ये some लोग आवाज सुनाई जाएगा surveyed various parts of, excuse me, sir. Please mute yourself. It is disturbing, sir. Sorry. For future researchers shall have data on this on which they can easily bank upon as like I was addressing these problems. During the survey, it was noticed that the most of archaeological sites are either converted into the agriculture fields or soil removed by the development purpose. The situation is very grim because in a few years it will be very difficult to find archaeological sites for excavation. Even today, it is very hard to spot an intact mound. Only mound we found. Hence, the present study has its own importance as the sites are now recorded for posterity, which may not exist in future. Thank you, ma'am. You may ask any question. I think we can take the questions at the end of the session. Yes, ma'am. Why not? Thank you, ma'am. Thank you. So I'll now call the second participant, Dr. K.K. Sharma. If you are present there, please start with your paper. Dr. K.K. Sharma. Dr. K.K. Sharma is there? जी ma'am, I am here. Yeah, please you start with your session. Just Yes. a minute. You are not audible, sir. Actually, I want to share my screen. Please allow me to share my screen. Please allow me to share my screen. Hello. बोल ही नहीं रहा। हेलो डॉक्टर के शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम आवाज आ रही है, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ, उसको अलाउ कीजिए आपने आपसे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 सेशंस चल रहे हैं ना। आप प्लीज अपना जिस बता दीजिए, जो आपने पेपर लिखा है ना सर, वो जिस बता दीजिए सर। एक्चुअली मेरा पेपर बागपत की आर्कियोलॉजी पर है और बागपत के लिए कहा जाता है कि अभी आप सब लोग भी परिचित होंगे, सिनौली ने पूरे बागपत के
आर्कियोलॉजी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। बागपत बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, और उसमें अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने 2005 में भी और 2018 में भी एक एक्सकवेशन किया था जिसको सिनौली के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे अभी रथ भी निकले थे और उसने पूरे इंडियन हिस्ट्री को बहुत चेंज कर दिया। तो वहाँ मैंने बहुत सारा विलेज टू विलेज सर्वे किया, केवल सिनौली ही नहीं है बल्कि सिनौली के अलावा बहुत सारे और वहाँ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम समझ सकते जिनको हम जानते हैं। तो हम पाएंगे कि यमुना और हिंडन 2 नदियां हैं वहाँ। उन दोनों नदियों के किनारे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे माउंट्स मिलते हैं हमें वहाँ, बहुत सारी उसमें पॉटरी मिलती है जिसमें विशेष रूप से पेंटेड ग्रेवेयर एक पॉटरी है जो कि एक मुझे लगता है कि वो पूरी साइट जो है एक न्यूक्लियर जोन है पेंटेड ग्रेवेयर का। और वहाँ जो पेंटेड ग्रेवेयर पाया जाता है वो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का है। हस्तिनापुर और अहिछत्र की मुकाबले में भी अगर हम बात करें तो बहुत फाइन पेंटेड ग्रेवेयर वहाँ है। और वहाँ हर 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के बाद यमुना बैंक की भी बात करें और दूसरी तरफ हिंडन नदी की भी बात करें तो दोनों ही नदियों के किनारे हमें बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, और वो ज़्यादातर साइट्स मल्टी कल्चर्ड साइट्स हैं। और प्रेजेंट डेज में भी विलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ है, जो ऐसा लगता है कि ये जो है कंटिन्यूस सिविलाइजेशन इस पूरे के पूरे बेल्ट में रहा है। और अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें तो लिटरेरी सोर्स में भी बागपत का जिक्र हमें महाभारत में विशेष रूप से मिलता है, जो उद्योग पर्व है उसमें ये कहा गया है कि महाभारत उन 5 गांव, महाभारत में जो युद्ध से पूर्व जो 5 गांव मांगे गए थे पांडवों द्वारा, उनमें से एक ये बागपत जनपद भी था, क्योंकि महाभारत के उद्योग पर्व में ऐसा वर्णन मिलता है हमें कि जब कृष्ण संधि के लिए जा रहे थे तो वो व्रत स्थल नामक स्थान पर रुकते हैं जब वो हस्तिनापुर जा रहे थे संधि के लिए, और वो व्रत स्थल रुकते हैं तो वहाँ के कुछ लोग स्वस्तिक वाचन पढ़ते हैं और उस स्वस्तिक वाचन से कृष्ण बहुत प्रभावित होते हैं और ये कहते हैं कि यह स्थान क्या है, व्रत स्थल नहीं होना चाहिए, इसका नाम वाक प्रस्थ होना चाहिए। वाक मतलब भाषा, प्रस्थ मतलब तेज, यानी भाषा में बहुत अधिक तेज लोग हैं। अगर आप आज भी वहाँ विजिट करते हैं तो आप ये पाते हैं कि वहाँ की जो लोकल डायलॉग है, जो जो लोकल एक्सटेंट है, तो वहाँ लोग क्या है कि वाक पटु बहुत है, लोग हाजिर जवाब बहुत है। और मुझे लगता है कि वो प्रभाव तब से ही रहा और इसी वाक पटुता से कृष्ण प्रभावित हुए, उन्होंने इस स्थान का नाम वाकप्रस्थ रखा। और वाकप्रस्थ का अगर आप बार बार उच्चारण करें वाकप्रस्थ तो वो बागपत हो जाता है। तो बहुत लंबे समय तक इसका नाम वाकप्रस्थ रहा, परंतु बाद में अब आकर के वर्तनीय शुद्धियों और बोलचाल की भाषा के कारण इसका नाम बागपत हो गया। तो लिटरेरी एविडेंस भी हैं इस क्षेत्र के प्राचीन होने के, और जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे अपनी स्लाइड शेयर करने का मौका मिलता तो मैं आपको ये दिखा पाता कि कितनी आर्कियोलॉजिकल पोटेंशियल है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। न केवल सिनौली बल्कि सिनौली के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ यहाँ पर बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट रही हैं, चाहे वो वारणा व्रत जिसे हम कहा जाता है, जहाँ लाक्षागृह रहा, वो भी इसी बागपत जनपद में आता है। वहाँ पर भी ASI ने एक्सकेवेशन किया था और वहाँ आज भी वो सुरंग भी मौजूद है और सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाए जाते हैं। बालैनी एक क्षेत्र है कृष्णा और हिंडन जो रिवर हैं उनके संगम पर बना हुआ है। इसके अलावा परशुराम का खेड़ा है जहाँ हड़प्पन पॉटरी पाई गई है। तो इसी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, यद्यपि वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है क्योंकि नदी की दूसरी तरफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ बागपत डिस्ट्रिक्ट है। परंतु इस हड़प्पा की बहुत सारी और भी साइट्स, जैसे एक गांव है सिंगोली ब्राह्मण, वहाँ डिश ऑन स्टैंड्स मुझे काफ़ी मिले थे हड़प्पन पीरियड्स के, जब वहाँ से मिट्टी उठाई जा रही थी। तो ये जो सिनौली की साइट है ये भी इसी तरह से प्रकाश में आई थी कि एक खेत जिसका था उसने मिट्टी उठाने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और वहाँ से मिट्टी उठाई जा रही थी। तो बहुत सारे स्केलेटन, बहुत सारी पॉटरी सामने आई। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ तो मुझे लोगों ने संपर्क किया और मैं वहाँ पहला विजिटर था जो इतिहास को समझने वाला था। तो मैंने ये समझा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। हम लोगों ने उसकी सूचना दी और उसके बाद ASI की टीम ने वहाँ 2005 में एक्सकवेशन किया डॉक्टर DV शर्मा ने। तो वहाँ सबसे बड़ा शवाधान केंद्र आप सब जानते हैं हड़प्पा का हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और अभी 2018 में जब वहाँ उत्खनन किया गया तो इतिहास को बहुत परिवर्तित करने वाला एक रथ, क्योंकि रथ का जिक्र काफ़ी बार
हर एक लिटरेचर में हुआ है, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, तो लोग हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते रहे कि इस तरह के कोई अवशेष हमें नहीं मिले, पर सिनोली ने उन सारे प्रश्न चिन्हों के जवाब दिए हैं। और वहाँ ग्रेव्स में एक ग्रेव्स ऐसी थी जिसमें 2 रथ मिले, एक ग्रेव ऐसी थी जो महिला की थी और उसमें एक रथ मिला, और एक धनुष का भी वो मिला, जिससे पता चलता है कि एंशिएंट पीरियड में भी हमारे यहाँ उस समय में भी वुमेन वॉरियर्स थी। तो ये पूरा क्षेत्र एंटीना सोर्ड का पूरा मिलना, एंटीना सोर्ड का ग्रेव में मिलना, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर मिलते हैं हमें इस क्षेत्र से, और इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावना है। और यदि और अच्छे से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि और बहुत अधिक पोटेंशियल हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, मुझे भी अभी एक मीटिंग में जाना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Ma'am, who will be the next presenter? Are you there? I can see Shaukat ji. Are you ready to present? Is there anyone who wants to present? Ma'am, Desh Deepak Verma. Okay, okay. Please Research go ahead. Scholar, MLK PG College, Balrampur. Desh Deepak Verma ji. Okay, please go ahead. जी मैम नमस्ते, मैं देश दीपक वर्मा, शोध छात्र MLK PG कॉलेज बलरामपुर। हमारे शोध लेख का शीर्षक है विरासत, स्वामी विवेकानंद जी का नव्य वेदांत आधारित शिक्षा दर्शन। देश दीपक वर्मा, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। ओके सर। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का आधार स्तंभ। टॉपिक फिर से बता देंगे। भारतीय दार्शनिक विरासत, स्वामी विवेकानंद जी का नव्य वेदांत आधारित शिक्षा दर्शन, ये हमारा शीर्षक है मैम। आगे सर पढ़ें अपना पेपर। जी प्लीज। ओके। प्रस्तावना। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का आधार स्तंभ भारतीय दर्शन है। देश की ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर भारतीय दर्शन सुसंस्कृति एवं सभ्यता की स्थापना में महती भूमिका निभाए हैं। किसी भी देश की सांस्कृतिक विविधता, मानव कल्याण तथा सामाजिक समरसता का आधार दर्शन ही है। इसी क्रम में हमारा देश दर्शन की विद्या में धनी रहा है। दर्शन के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम प्राचीन काल से ही अग्रणी रहा है। विभिन्न दार्शनिक विद्वान विदुषियों ने भारत को दर्शन की विरासत प्रदान की है। आज भी इसी विरासत रूपी स्तंभ पर आधुनिकता एवं वैश्वीकरण की विशाल इमारत खड़ी है। भारत के संदर्भ में दर्शन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात सूक्ष्म दृष्टि द्वारा सामान्य वस्तुओं एवं घटनाओं के पीछे छिपे सत्य को देखना। भारतीय दर्शन में वस्तु एवं घटनाओं के पीछे छिपे सत्य की खोज की जाती है। निश्चय ही उसकी प्रामाणिकता उसके साक्षात्कार में होती है। भारतीय दर्शन की अनेक विधाएं प्रचलित हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक, इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा नामक 6 दर्शन आते हैं। दूसरे में अवैदिक, इसमें जैन, बौद्ध, चरवाक दर्शन आते हैं। दोनों ही वर्गों के दर्शन अपनी प्राचीन विरासत एवं अमूल्य योगदान से संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत दर्शन की पुनर्व्याख्या की
तथा वेदांत को आधुनिक संदर्भ में समझने के लिए, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए तथा जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उसे व्यवहारिक बनाने के लिए नव वेदांत का रूप दिया। नव वेदांत दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है मानववाद। स्वामी विवेकानंद जी का नव वेदांत आधारित शिक्षा दर्शन बहुत ही मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दर्शन का आधार भारतीय वेदांत अथवा उपनिषद रहे हैं, जिनके द्वारा बदलते हुए परिवेश एवं अतिभौतिकवादिता के बीच मानव कल्याण एवं उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया। उनके शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य था मानव का नवनिर्माण एवं उत्थान, क्योंकि इसी से संपूर्ण समाज एवं मानवता का उत्थान हो सकता है। उन्होंने व्यक्ति एवं समाज दोनों का संतुलित विकास करना ही शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किया है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। संबंधित साहित्य की समीक्षा में हमने विभिन्न साहित्य का अध्ययन किया और पाया कि विश्व में दर्शन शास्त्र का उद्भव सबसे पहले भारत में हुआ। भारतीय दार्शनिकों की सत्य की खोज की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने माँ भारती की वसुंधरा पर दर्शन के बीज बोए। भारतीय दर्शन की उदारता ही उसकी प्राचीन विरासत एवं समृद्धि का कारण है। इसमें हिंदू तथा अहिंदू, आस्तिक तथा नास्तिक सभी के दार्शनिक विचार शामिल हैं। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि शिक्षा व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करे, छात्रों को स्वावलंबी बनाए, छात्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करे और अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। समस्या का औचित्य: प्राचीन भारतीय दर्शन भारत ही नहीं अपितु विश्व की अमूल्य धरोहर है। साथ ही हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्श का आधार है। लेकिन आज भारत ही नहीं अपितु विश्व का समस्त जनमानस भौतिकता एवं आधुनिकता के वशीभूत होकर भारतीय दर्शन के वास्तविक स्वरूप को भूलता जा रहा है। आज समाज में चारों तरफ अराजकता, व्यभिचार, अनैतिकता, अमानवीय व्यवहार व्याप्त होता जा रहा है। इसी क्रम में शिक्षा जगत में भी ह्रास हुआ है। अध्ययन का उद्देश्य: हमारे शोध अध्ययन का उद्देश्य प्राचीन भारतीय दार्शनिक विरासत से भारत सहित वैश्विक स्तर पर समस्त जनमानस को लाभान्वित करना, भारतीय दार्शनिक विरासत के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का नव वेदांत आधारित शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना, स्वामी विवेकानंद जी के नव वेदांत शिक्षा दर्शन को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शामिल करना। व्याख्या एवं विश्लेषण: भारतीय दर्शन विश्व पटल पर एक ऐसी विरासत है जिसमें लौकिक एवं पारलौकिक जगत को जानने समझने के सभी मार्ग समाहित हैं। साथ ही हम दर्शन शास्त्र के माध्यम से जीवन एवं समाज की सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। भारतीय दर्शन से अभिप्राय समस्त भारतवर्ष के किसी भी संप्रदाय, धर्म एवं जाति द्वारा मनन चिंतन किए गए दर्शन से संबंधित है। यह भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हजारों वर्ष पहले जब विश्व के अधिकतर देश अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए आदिवासियों जैसा जीवन बिता रहे थे, तब भारत की वसुंधरा पर ज्ञान के अनेकों दीप जगमगा रहे थे। ज्ञान के इन दीपों को प्रज्वलित करने में योगदान देने वाले भारतीय मनीषी सामान्य घटनाओं के कारणों को ढूंढने के साथ साथ जीवन की मूल समस्याओं जैसे सुख दुख, जीवन मृत्यु, जगत का कारण ढूंढने थे तथा सत्य की खोज करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते थे। भारतीय मनीषियों की सत्य की खोज की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने ही भारत भूमि पर दर्शन के बीज बोए, जो कालांतर में विशाल वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसकी शाखाएं समस्त विश्व में फैली। नव वेदांत दर्शन का मूल सिद्धांत है संसार में एक ही ब्रह्म सब जगह व्याप्त है और वह अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। तथापि स्वामी जी ने इसी आधार पर अपने शिक्षा दर्शन में सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। स्वामी जी का शिक्षा दर्शन बहुत ही मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जिसमें एक ओर पूर्व की आध्यात्म और दूसरी ओर पश्चिम के विज्ञान को समाहित करके शिक्षा के क्षेत्र में
एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का खंडन किया, क्योंकि यह शिक्षा हमें अपनी संस्कृति के अनुकूल नहीं बनाती। यह शिक्षा हमारे युवाओं को केवल नौकरी प्राप्त करने के योग्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। स्वामी जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसके द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों पक्षों का विकास हो सके। लौकिक दृष्टि से उन्होंने नारा दिया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य के निर्माण की शिक्षा कहते थे। अंत में निष्कर्ष रूप में प्राचीन भारत के गौरवमयी विरासत में दर्शन का अपना अभीष्ट स्थान है। दर्शन ही है जो भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक विरासत का आधार बना। यह बिना दर्शन के पूर्णता संभव नहीं था। भारतीय दर्शन के गौरवमयी शाखाओं में वेदांत का अपना एक अलग महत्व है। वेदांत दर्शन मानव श्रेष्ठता के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाता है। इसी क्रम में स्वामी जी द्वारा वेदांत के संशोधित एवं परिष्कृत रूप नव वेदांत दर्शन का योगदान भी अतुलनीय है। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ सर, पूरा हो गया सर हमारा। थैंक यू देश दीपक जी। जी मैडम। अब नेक्स्ट प्रेजेंटर जो हमारे हैं सोनिया जसरोटिया, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। सोनिया जसरोटिया, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। प्रवीण कुमार कर चुके हैं। जो भी अवेलेबल हो अपना पेपर प्रेजेंट करे, जिसका बचा हुआ है। जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक पेपर प्रेजेंट नहीं किए हैं, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। Ayushi Jain is there. Ayushi, are you ready to present? Sonia Jasrotia, please present your paper. Thank you, sir. Thank you, ma'am. My present, I just want to, kind of close my camera because of this, there's disturbance in online presentation. So I just want to, kind of go with the off camera. Is it okay? Okay, no problem with that. You please go ahead. Okay, great, ma'am. Thank you. So my presentation is on excavated, explored, and newly explored Buddhist sites of Kashmir. I'm not going into the history. I mean, geography, because everyone knows about Kashmir, how it's how it's geographically there. So I'm just going direct to the story which introduced Buddhism in Kashmir. That also everybody knows, but I just want to kind of go give the introduction of how Buddhism was introduced. As you all know, that Ashokan Rock Edict testifies that missionaries were sent to far off countries, and Buddhist account as well as Kashmiri chronicle like Nimad Puran of Dan Kalpita of Kshemendra and Raj Tarangani of Kalhans narrate intense counter of the indigenous tribe called Naga with Buddhist monk Majhantik. But Kalhans Raj Tarangani has mentioned Surendra as propagator of Buddhism before Ashok. So, who built two viharas in Kashmir. You can see the, if you want to, kind of see these steins. Hello.
Yes, ma'am. Please continue. Okay, because there is some disturbance. Okay, so if you see the Stein's translation, we can see this, that after Surendra, Ashoka built Ashoka brought 5,000 monks and settled them in Kashmir and the adjacent territories. He built several mats and viharas and gifted to the valley of to the Sangh. Ashokan's introduction of Buddhism, naturally changed the entire social fabric in Kashmir. Here, we see that number of, we can see that there are some uh, yeah. Here we can see that many books and many references are there that Ashoka built 84,000 stupas and chaityas or viharas in India. But here it seems he might have built 84,000 stupas, but uh, uh, it might have been in the form of small stupas, like it might have included votive stupas or symbolic stupas, because we can see that in Jammu also we have, it, 63 crores of devtas. We have one temple in Jammu, so that is symbolic form. There might have been, like, votive stupas and symbolic stupas in that count. So the scholars and pandits pursued the Buddhist philosophy and took an active part in propagation of Buddhism. It is said that Ashoka uh, built, viharas and chaityas in Kashmir, and he credited of building a new capital city in Kashmir called Srinagar. The conclusion of the deliberation of Buddhist council held in Patliputra under the presidency of Moghli Tis, Majhantik's Thera was sent to Kashmir, and with him, the 5,000 monks were settled in Kashmir by Ashoka. So the fourth Buddhist council to the Sangh for turning it into the center of study and propagation of Buddhist texts. After the fall of Mauryan Empire, northern Western India come under the subjugation of Indo-Greek, was followed by Kushan and other nomads who hailed from Central Asia. Kashmir, which was included in their domain, witnessed a great resurgence of Buddhism during this time. The revival of Buddhism began in the reign of Kanishk, the great Kushan king. It was his time the fourth Buddhist was held in Kashmir. And now coming to the excavated Buddhist sites, I'm just taking the names because I just wanted to show these sites, with the pictures, but unfortunately we cannot do that. So there's one site which is in Parihaspura, which is a Buddhist heritage site, and well excavated and well conserved. The conservation is done by the Archaeological Survey of India. And the other site we have in in the form of on the name of Chankuna Stupa, which is still in well preserved and conservated by Archaeological Survey of India, and it is believed that it was Rajavihar of King Lalita later. The monastery is quadrilateral form and having 26 cells. The Parihaspura structure is also now totally vanished, but still we have huge mass of um, constructed structure or a base structure there, which is well preserved also. The the other is the Kanishpura Stupa, and yes, Marwan Monastery. So these are the sites which are explored, already excavated and explored. The new site, which we have done exploration in 2000
2013 was in Baramulla district, and Ayushi Jain, please present your paper. Ayushi sorry. Jain. Hello. 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 Am I audible? Hello. Hello. Ayushi Jain, please present your paper. So, excuse me, sir, am I audible? You are audible. Please present your paper. Yes, so 1 second. May I present my screen? Ayushi Jain, please present your paper. I think you have network problem, so I call next presenter, Shaukat Ahmad. Shaukat Ahmad, please present your paper. Shaukat Ahmad, please present your paper. Shaukat ji, are you there? Excuse me, ma'am. Yes. Is this Ayushi? I wanted Is to know there if I anyone can who is present. Ayushi? You want to present? Ayushi ji, are you ready to present? Hello. Yes, ma'am. Please present your I paper. want to know if I can present my slides. Shaukat May- Ahmad, please present your paper. Actually, Ayushi ji wants to present her paper.
सर हमको भी दे दीजिए प्रेजेंट करने के लिए, नहीं कोई है इस समय जुड़ रहा है। Am I audible, sir? आई थिंक राजन जी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कर दीजिए जब नेटवर्क में। Hello? जी 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 मैम, हमको दे दीजिए, हम कर दे रहे हैं मैम प्रेजेंट। हेलो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ पेपर। जी 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 मैम, आवाज नहीं आ रही थी, बोल रहे हैं मैम। हाँ, सबसे पहले प्रणाम मैम को। मैं राजन कुमार त्रिपाठी, शोध छात्र, MLK PG कॉलेज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा टॉपिक है बौद्ध शिक्षा, भारत की अनूठी संपदा। जो सारांश है, शिक्षा जो है विकास की वह प्रक्रिया है जो अपने व्यापक अर्थ में हर क्षण हर स्थान पर बदलती रहती है। इसके अनेक रूप हैं। इसके द्वारा समाज, राष्ट्र सभी का विकास होता है। अतः इसके कार्यों में की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। बौद्ध शिक्षा भारत की अमूल्य संपदा है जो भारतीय जीवन दर्शन सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भावेत के आदर्श से अभिप्रेरित है। बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता पहले प्राचीन काल में थी, आने वाले समय में भी रहेगी। शिक्षा मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंध रखती है, क्योंकि यह हमें भूत से परिचित कराती है, वर्तमान में जीवन जीने के योग्य बनाती है तथा भविष्य के निर्माण के लिए आधार प्रदान करती है। बौद्ध दर्शन के विचारों से समाज को सशक्त बनाने के लिए बुद्ध से पूर्व चली आ रही वैदिक धर्म व्यवस्था में कर्मकांडों की अधिकता, यज्ञ में बलि देने की परंपरा, छुआछूत, बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता आदि में अनेक दोष आ गए। इस संक्रांति काल में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का उद्भव विकास हुआ, जो भारत की अमूल्य धरोहर है। बुद्ध ने मानवता से पीड़ित के लिए सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, त्याग, कर्म का जो संदेश दिया, साथ ही जियो और जीने दो के सिद्धांत पर बल दिया, जो भव व्याधि से पीड़ित मानवता के लिए वरदान हो गया। साथ ही बुद्ध ने असमानता के प्रति आवाज उठाई और शिक्षा का द्वार समाज के सभी वर्ग के लिए खोल दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, जिसे सामान्य लोग भी उसके उपदेश को बोधगम्य कर सके। आज शिक्षा मनोवैज्ञानिक बच्चों के शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा अर्थात प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, यह बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 में कही गई। बुद्ध के लोक कल्याणकारी आदर्श विचार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय द्वारा जिसे समझा जा सकता है। भगवान बुद्ध का संदेश, शांति का संदेश आज उतना ही अहम है जितना शताब्दियों पहले था और भविष्य में रहेगा। बुद्ध के शांति के संदेश को अपनाकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को Ranjan Kumar Tripathi, please unmute your mic, then you present your paper. Yes, sir. Your mic is mute.
राजन जी आपका माइक ऑन करिए, इट इज म्यूट। रंजन कुमार त्रिपाठी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अपना ऑन कर लीजिए। आयुषी जैन, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। मेरा किताब कौन सा है? आयुषी जैन। बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ढेर सारी शुभकामनाएं। मिठाई बाद मिठाई। Aishi ji, if you are there, please present your paper. प्रवीण कुमार जी, आपने पेपर प्रेजेंट कर लिया है? Yes, sir. I presented. विराग जी, आप प्रेजेंट करिए। विराग सोनटके जी, डॉक्टर विराग सोनटके, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। Okay. Okay, can you see this screen? Am I audible to you? जी, आपका दिख रहा है। You are And my audible. screen is visible to you all? No, not yet. Yes, yes. Is it visible? Yes, it's visible now. And how much time do I have? How much time do I have for presentation? 10 minutes. Okay. Okay, so good morning, all of you. My topic is a recent perspective in the megalithic culture of Vidarbha in Maharashtra. I'm Dr. Virag Sontake. Currently, I'm in position of assistant professor in the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology in Banaras Hindu University. I am basically from Nagpur, Maharashtra, and my topic is also dealing with the same. So the area under study is a Vidarbha, which is the eastern part of Maharashtra, which is very important for the megalithic culture of India. The Vidarbha is consisting 11 districts, and Vidarbha is the only region after South India that has yielded more than hundreds of megalithic sites. Plenty of excavations and exploration has been conducted in this area. कैसे connect हो गया आपसे? Very much helpful for study and analyze the culture. So here is a map of Vidarbha basically. In this part of where the Nagpur is situated, Nagpur is a part of Vidarbha here in the map. So what is the situation of Vidarbha megalith when we see? So the area is covering near about 300 kilometers by 300 kilometers. And there are 6 districts which are consisting the megalithic sites. And up to 2020, we are having more than 135 sites. And out of them, only 10 habitation sites has been excavated so far. And 98 megalithic burials has been excavated up to till now. So this is the map of
whole megalithic culture of Vidarbha, where near about 135 sites has been plotted in the area of eastern Maharashtra. In this map, in the whole India, where you can observe the concentration of megalithic sites very, very dense when we go to from north to south. And this is the pocket where what I am concerning now, Vidarbha. So when we see the distributions of megalithic site in Vidarbha, so there are only 6 districts which are consisting the megalithic burials, and there is a very mighty river known as the Vainganga. So the Vainganga is the very perennial river in this area, and there is a distinct geographical pattern. To the eastern side of Vainganga, we are having the different geology, and to the eastern side of Vainganga, we are having the different geology. And therefore, though the region lie in the same pocket, but due to distinct geographical pattern, the megalithic burials also visible in the distinct typological pattern. So therefore, there are now I have observed the 2 distinct zones of the megalithic category, which I divided into zone A and zone B. So zone A is Nagpur and the Wardha districts of present Maharashtra, and zone B is a Bhandara, Gondia, and the other 4 districts. So when we see what basic criteria we have observed in this zone A and zone B. So zone A is basically having the basaltic formation where the black rock is situated. However, in zone B, we are having the Gondwana formation where the multiple rocks are visible on the surface. There is a river like a Wardha and Kanhan, and here in the zone B, we are having the mighty river Vainganga, which is very big and perennial. The rainfall is also very important. In the zone A, the rainfall is quite less, very close to 1000 mm. But in the zone B, we are having the more than 1400 mm. So it's a rich zone of rainfall. And this land is more situated, more good for the cotton cultivation because it's a black cotton soil. However, in the zone B, we are having the very fertile land because the high rainfall. So the land is very suitable for the paddy cultivation. We are having the iron and coal deposit here in the zone A, and zone B, we are having the other mineral resources. So that indicate a distinct geographical pattern in the both the areas. And this geographical pattern directly indicating to the nature of megalithic sites in the both the zone. So let's focus upon the zone A. So the zone A, there are number of megalithic sites which are situated away from the habitation area, away from the living area. And basically these are the megalith which are constructed on the non-productive land, with non-agriculture or the barren land. And these sites are situated near to the rainy nala or the small river, very close to the jungle, and particularly at the slope of the hill and the rocky surface. This megalithic means, mega means big, lithic means stone. So society, those were using the big stone for the burial customs, for the symmetry. So therefore, we are having the number of megalithic burials in zone A, and zone A particularly having stone circle, cairns, and menhir. What are these? So these are situating. This is the Vainganga river here. It's very light here. You cannot observe. And these are the megalithic sites which are situated in the zone A. So this is the stone circle. Stones kept in a circular formation. Cairn. This is just a heap of the stone. And then menhir, which is the upright stone buried under the soil. So the zone A, we are having the stone which is used as a basalt. Very rarely we are having the Gondwana stones, and the soil basically the black cotton. So what the excavation resulted in the zone A? So we are having the number of skeleton remains. They are single, double, fragmentary, or child. When we see the picture of it, we can get the idea. So inside the burial, we are having the single skeleton remain, double skeleton remain, fragmentary skeleton remains, and so on. Not only the skeleton remains are found inside the burial, but so many burial appendages like a burial goods, like we are having the metal objects, we are having the stone objects, we are having the beads and all. When we see the picture, we can get the clear idea about the material culture of megalithic culture. So we are having the very variety range of iron material which were buried inside the circle. Let's move towards the zone B, though I have a very less time here. So the zone B is situating the eastern part of Vainganga river. So the Vainganga river, this map is
simply providing a detail about how rich this cover in the geology, geoformation, and the other resources of minerals and all. So therefore, the megalithic pattern in this area is also much diverse and much significant. So these are the sites situated in the zone B. When we see the zone B, there are a number of megalithic sites which were not present in the zone A. So this is the cyst, because the geological formation diversified here. So therefore, we are having the number of rocks like laterite, granite, sandstone, conglomerate, quartzite, gneiss, and in the zone A, there were only basalt. So therefore, availability of variety of raw material has modified the burial pattern of megalithic people in this area. So therefore, we are having the different kind of megalithic pattern here. We can identify the cyst, we can identify the dolmens, the multiple cysts in the circle, the menhirs. This is all because of the diverse geological pattern. Again, the capstones. Not only this availability of raw material also indicating the new type of megalithic construction. We can identify that the walls which have been erected at the all side of dolmen, the excavation has been reflecting. So not only zone B is only giving us a diverse architectural pattern, when we excavate the area, so we are also having the new hitherto unknown megalithic types of Vidarbha. So we are having inside the cyst here. We are also having inside the double cyst, which is not present in anywhere. We are having the small cyst inside and the burial goods. We are having the number of other features which were not present in zone A. The cyst with a multiple cyst, you can identify that. So such kind of architectural arrangement has been made here to signify the ritual of death. So this kind of pattern was not present in zone A. So therefore, not only the cyst and architecture, but we are also having the child burial which was kept inside the pot. So this was the pot, and inside the pot the child burial was kept. Not only the child burial, but the another skeleton remains has also been found in a fragmentary remains. So what are the salient feature of zone B? So it's clearly indicating the different typology. Very less skeleton remains has been found, and we excavated 8 megaliths as zone B, and out of 8 megaliths, only 1 megalith has given us a cattle remains and one child remains. So this all seems to be commemorative burials. Different nature of inner architecture, and the material remains which we encountered inside the burials are the coarse, gritty redware, and this ceramics seems to be especially used for the burial practice. We are not having the blackened redware or the painted redware, and no burial appendages has been found. What picture suggests that the much labor, so many man has been utilized and so many time has been utilized to construct a single burial. So therefore, it seems to be a societal impact upon the creation of the burial. So when we see the comparative analysis of the zone A and zone B, so these are the megalithic burials where we see that in zone A there are number of stone circles in a numerous, but in zone B their number are very less. Apart, we are having the 28 numbers of menhir, which are very seldom in zone A. So this type of different architectural pattern seems to be indicate the diverse geological zone. And not only this, but this seems to be a different sect of people living on the both bank of Vainganga. So the zone A, which is the western part of Vainganga, where we are having typologically only 2 types, stone and cane circle. But zone B, there are various types has been identified. There is no inner architecture in zone A, but zone B, there are very plenty burial architecture. Burial appendages are concerned, so there are very much burial appendages in zone A in the Nagpur area, but very less in the zone B. The raw material, basically they are constructed zone A in the basalt, but the variety of rocks has been found. All megalithic identified with the pottery, means the ceramics, number of ceramics has been identified, and here only coarse redware has been found. The skeleton remains are concerned, so we are having the numerous skeleton remains in zone A.
but zone B very negligible, very less. And the horse remain which are present in zone A but not in zone B. So, but when we see the prominent feature, so zone A and zone B, we are having the equivalent typology, basalt, use of black cotton soil, number of skeletal remains, fragmentary bones, and variety of burial goods. But in zone B, diverse typology, variety of raw material, no skeletal remains, and so on. So when we see, so zone A and zone B are clearly indicating the individual regional character of megalithic culture of Vidarbha. This distinct variation in typology, mode of disposing of dead, mortuary practices, and burial goods seems to be different and separate. This zone represents a different megalithic tradition and possibly different identity of people or the cultural uniformity. And therefore, megalithic of zone A influence from the nearby area of Chhattisgarh and the South India. And last, the environmental adaptation must have been played a vital role in the megalithic development. So this is it. I'm ending my presentation. If you have any question, you can ask. And thank you for giving me this opportunity to present my paper in this esteemed platform. Very nice presentation, Dr. Virag Sonthake ji. Or now I'm called to Ayushi Jain. If please come and present your paper. Ayushi Jain. जितने लोग जुड़े हैं उनमें से अगर किसी का भी प्रेजेंटेशन बचा हो तो प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। सर हम कर दे रहे हैं अपना, हमको कर लेने दीजिए सर। सर आपका तो हो चुका है। हो गया मेरा। राजन कुमार त्रिपाठी, बौद्ध शिक्षा भारत की अनूठी संपदा। सर चलिए प्रेजेंट करिए। सबसे पहले सर को प्रणाम, धन्यवाद। बौद्ध शिक्षा भारत की अनूठी संपदा है। हेलो हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है सर, वही सर, आवाज का प्रॉब्लम पड़ जा रहा है। हम बोल रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है बौद्ध शिक्षा भारत की अनूठी संपदा है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जो अपने व्यापक अर्थ में हर क्षण हर स्थान पर बदलती रहती है। इसके अनेक रूप हैं। इसके द्वारा समाज और राष्ट्र का विकास होता है, अतः इसके कार्य को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। बौद्ध शिक्षा भारत की अमूल्य संपदा है जो भारतीय जीवन दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत् के आदर्श से अभिप्रेरित है। बौद्ध शिक्षा की प्रासंगिकता प्राचीन काल में भी थी, आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंध रखती है। क्योंकि यह हमें भूत से परिचित कराती है, वर्तमान में जीवन जीने के योग्य बनाती है और भविष्य के लिए आधार प्रदान करती है। बौद्ध धर्म दर्शन के विचारों से समाज को सशक्त करने के लिए बुद्ध से पूर्व चली आ रही वैदिक धर्म व्यवस्था में कर्मकांडों की अधिकता, यज्ञ में बलि देने की परंपरा, छुआछूत, सामाजिक असमानता आदि में अनेक दोष आ गए थे। ऐसे में भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और एक नवीन शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में अमूल्य संपदा के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, त्याग का संदेश दिया। साथ ही जियो और जीने दो के सिद्धांत पर बल दिया, जो भव व्याधि से पीड़ित मानवता के लिए वरदान हो गया। साथ ही बुद्ध ने असमानता के प्रति आवाज उठाई और शिक्षा का द्वार समाज के सभी वर्ग के लिए खोल दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया, जिसे सामान्य लोग उनके उपदेश को बोधगम्य कर सके।
आज शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा अर्थात प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, यह बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 में कही गई थी। भगवान बुद्ध के विचार आज भी लोक कल्याणकारी हैं, जिसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के द्वारा समझा जा सकता है। भगवान बुद्ध के शांति का संदेश आज उतना ही अहम है जितना पहले था और भविष्य में रहेगा। भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश अपनाकर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जा सकता था। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, जिसे व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि हो रही है, जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। संपूर्ण विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, जिससे एक देश दूसरे कमजोर राष्ट्र पर परमाणु बम गिराने की बात कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण मानवता पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। पूरी दुनिया विनाश के कागार पर खड़ी होने जा रही है, जिससे बुद्ध की शांति शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। भगवान बुद्ध का कहा गया एक वाक्य अत्तो दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी दूसरे के लिए से उम्मीद लगाने के बजाय साथ ही दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो, क्योंकि एक दीपक दूसरे दीपक को तभी प्रकाशित कर सकता है जबकि उसमें स्वयं का प्रकाश हो। यदि चीन जैसा देश भगवान बुद्ध के अहिंसा परमो धर्म को मन वचन कर्म के द्वारा अपनाता, जीव जंतु को मारकर चमगादड़ सांप मांस के सूप का सेवन ना करता, तो पूरे विश्व को वैश्विक महामारी कोविड-19, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन जैसे महामारी से बचाया जा सकता था, जिससे संपूर्ण विश्व के करोड़ों लोगों की संख्या में लोग मारे गए। भारत में डेल्टा प्लस ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग ऑक्सीजन के बिना तड़फ तड़फ के मर गए। पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा था, इससे बचा जा सकता था। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण और बुद्ध ने दुख को पहचान कर उससे बचने का मार्ग बताया। भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण ऊंच नीच होता है। भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग के द्वारा वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता, शिक्षा जगत में व्याप्त पक्षपात, परिवारवाद तथा गुरु शिष्य संबंध आदि जो कमजोर पड़ गए हैं, उनको सुदृढ़ किया जा सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षण की विधि, नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में बुद्ध की शिक्षा के द्वारा सुधार किया जा सकता है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे, वो प्राचीन काल और आधुनिक काल आने वाले समय में संजीवनी बूटी का कार्य कर सकते हैं, जिसकी प्रासंगिकता संपूर्ण मानव समाज के लिए हमेशा रहेगी। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने बताया कि जो है शिक्षा जो है एक व्यक्ति के लिए प्रकाश के समान है। अर्थात मनुष्य का वह तीसरा नेत्र है। साहित्य, संगीत, कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। शिक्षा रूपी प्रकाश फैलाने में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक ही विद्यार्थी को अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। भगवान बुद्ध ने वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित शिक्षा दिया, बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के समान अन्य को मानना चाहिए। भेदभाव, ऊंच नीच, घृणा, छुआछूत से दूर संपूर्ण विश्व के लोग मेरे परिवार हैं, ऐसी भावना रखना बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो विश्व बंधुत्व पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने धम्म को मानवतावादी मानते हैं। धम्म का अर्थ होता है शील, सदाचार, नैतिकता, मानवता, सहयोग, सहानुभूति, सदाचार, अहिंसा, करुणा, दया, त्याग, शांति, शिक्षा, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग मानव जीवन के वास्तविकता से संबंधित हैं। आज के संसार में उपेक्षित, शोषित, प्रताड़ित, दुखी मानव समाज के लिए यह वरदान की तरह है।
आज संपूर्ण संसार के अनेक भागों में विचारशील चिंतक, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री ने गौतम बुद्ध के संदेश के संदर्भ में समीक्षा करते हुए उन्हें विज्ञान के इस नाभिकीय युग में सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए, विशेषकर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य और उपयोगी माना है। समस्त विश्व में हिंसा, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, आतंकवाद तथा आए दिन जो है वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण तृतीय विश्व युद्ध का संकट मानव के बीच परस्पर बढ़ते वैमनस्य की स्थिति पर एक ऐसे कागार पर लाकर खड़ा किया है जहां पर ऐसा लगता है कि समस्त मानव सभ्यता कहीं विलीन ना हो जाए, और मानव सभ्यता के विलीन होने के साथ ही जड़ चेतन प्राणी के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र ना हो जो आज वर्तमान समय में आतंकवाद, सांप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद से प्रभावित ना हो, चाहे भारतीय उपमहाद्वीप हो या एशिया के अरब के राष्ट्र हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो आदि जैसे देश वर्तमान समय में आतंकवादी हिंसा के कारण लगातार जनधन की हानि हो रही है। लाखों की संख्या में निर्दोष जनता मारी जा रही है। महंगाई जोरों पर बढ़ रही है। रूस द्वारा यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी जा रही है, जिससे संपूर्ण मानवता के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वर्तमान समय में ज्वलंत समस्याओं से जूझती मानव। रंजन कुमार त्रिपाठी, प्लीज जी सर। conclude your paper. You are going to beyond your topic. Please conclude your paper. जी 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 सर, ठीक ठीक। कितने लोग हैं? जी जी सर, जी सर, जी सर। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में तथा आने वाले आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो अनेक कमी है उसको बौद्ध शिक्षा के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। जैसे शिक्षा में उद्देश्यहीनता, जातिवाद, अनुशासन, शैक्षिक अवसर की समानता, अंधविश्वास, गुरु शिष्य संबंध, अस्पृश्यता, नैतिक मूल्यों का विकास, कार्य कारण सिद्धांत, विज्ञानवाद, हाँ, सांप्रदायिकता, बाल अपराध, पाठ्यक्रम संबंधी कमी, शिक्षण विधि संबंधी समस्या, गुरु शिष्य के संबंध, मधुर संबंध, शिष्य का गुरु के प्रति व्यवहार, मन वचन कर्म से हिंसा ना करना, सत्य का पालन करना, चोरी ना करना, शांति की शिक्षा द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, अपराधी को सही मार्ग पर लाना, छात्रों के द्वारा मादक पदार्थ का सेवन ना करना, निंदा ना करना, समस्या का समाधान बौद्ध शिक्षा प्रणाली द्वारा संभव है। इस प्रणाली के द्वारा छात्रों में दया, प्रेम, नैतिक मूल्यों का विकास, सहयोग, शांति, शिक्षा, विश्व युद्ध की समस्या का समाधान, विश्व बंधुत्व की भावना, जियो जीनोदयो के सिद्धांत का विकास, शिक्षा में लोकतांत्रिक गुणों का विकास, चारित्रिक निर्माण, संस्कृत का संरक्षण, सादा जीवन, उच्च विचार, स्व अनुशासन, स्नेह, श्रद्धा आदि पर आधारित गुरु संबंध, नगर के कोलाहल से दूर माहौल, निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, समूह में व्यस्त दिनचर्या, जीवन यापन की अनेक बातें जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से प्राचीन और आने वाले समय में इनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। ठीक सर, हो गया सर। ओके ओके, थैंक यू राजीव कुमार त्रिपाठी जी। अभी जी जो सर। लोग कनेक्ट है इनमें से किसी का भी अगर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो आखिरी चांस है, वो लोग पेपर अपना प्रेजेंट कर लें। ठीक सर, हो गया मेरा। हाँ, हो गया आपका। अच्छा सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। जी जी, नमस्कार। जी सर, प्रणाम। और कोई है जिसने पेपर प्रेजेंट नहीं किया है? आयुषी जैन, आयुषी जैन। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अपना पेपर प्रेजेंट करिए। So 1 minute. आपकी आवाज आयुषी जैन आ रही है, अपना पेपर आप प्रेजेंट करें। हेलो। आवाज आ रही है आपकी, अपना पेपर आप प्रेजेंट करें। Yes, sir. So actually, I don't think I will be able to show my presentation. So I'll just give a brief summary of my paper. Is that fine? Hello.
Hello. Ayushi, please present your paper. Ma'am, is my I won't be able to present my slides. So if I give a brief summary, is it fine? Yes, yes. All right. So good morning, everyone. The topic of my presentation for today's session is on a glimpse of Buddhism in Mandsaur district through the means of rock cut architecture. As part of this paper, I had focused on 3 caves. The first among them was Pola Dungar, which is near the town of Garot in Mandsaur district. Second was in Khejaria Bhop, which is again in Mandsaur district, and the third one is Dhamnar Caves, which is the third cave, which is the third group of caves in Mandsaur district itself. Now, among these 3 groups of caves, 2 of them belong to the State Archaeological Department, while one, that is Dhamnar Cave, belongs to Archaeological Survey of India, like under their jurisdiction. So, all these group of caves approximately contain more than 100 caves, and these are all belonging to different time periods. So, 2 of them, that is Pola Dungar and Khejaria Bhop, belongs to Hinayana phase, while Dhamnar caves have a long period of occupation from Hinayana to Mahayana phase. Now, when we speak of these caves, there have been a lot of discussion, there have been a lot of debate based on their architecture, based on their features. And my objective here in this paper was to understand who patronized these caves, because we do not have any inscription or written sources, literary sources that talk about the construction of this cave. Secondly, I also wanted to date the caves because again, there aren't any written records available. So based on architecture, I have tried to group these caves under different categories. And thirdly, I also wanted to understand the political and the cultural significance of these caves. Now, beginning from the first cave, that is the caves at Pola Dungar. According to Dr. Bharti Shotriya, who did her PhD on these group of caves, there were about 33 caves, of which 2 were Chaitagriha and only one of them is there were 2 Chaitagrihas, of which only one survives. However, when I went to the site, I could only find 25 caves which were numbered, and 3 caves were not numbered. These were just viharas. The Chaitagriha of cave number 1, that is at Pola Dungar, have recently been converted into Shivling, and local population worship the stupa as a Shivling. So that's again a cultural study that this paper can offer in future. Secondly, the group of caves that I focused upon were at Khejaria Bhop. These were 28 caves of... Hello? Ayushi, please conclude your paper within 2 and 3 minutes. Hello? Please continue. Yes, ma'am. Is it fine now? Is the network okay? Yes, yes. All right. So the second group of caves are at Khejaria Bhop. This is a site which gets its name from the Khejaria plant, and it's located about 23 kilometers from the third group of caves, that is Dhamnar. Now, these group of caves are, all the 28 caves are viharas, and the stupa is placed outside the caves. So, all the cells are quadrangular. These are very simple cells with no embellishment. The facade of the cells is very simple, and the door that is used for entering the caves is very small and rectangular in shape. Few facilities that have been provided within the cave through excavating into the rock include niches and rock cut beds, but these are limited only to some caves like cave number 16. Now,
when I talk about the third cave, that is Dhamnar Cave, which is under Archaeological Survey of India as of now, there are about 80 caves, of which 51 caves are under them. And I have primarily focused on 14 caves there. These caves have an extension from the Hinayana phase till the Mahayana phase. And of the 3 caves that I'm focusing as of now, this is the only cave that has revealed sculptures of Buddha in rock. So we get to find Dhyani Buddha. We also find Buddha in a parinirvana posture, and we also find other features of Buddhist iconography, like that of like sculptures of Jambhala. Now, this cave, that is Dhamnar Cave, is also called as Mini Ellora because there is also a rock-cut Hindu temple that has been that was excavated. Now, when we talk of these caves, there have been a lot of discussion, there have been a lot of exploration that took place about 50 years ago, and no recent research has come up lately. So, according to a lot of scholars, the caves at Khejaria, Bhop, Pola Dungar, and Dhamnar belong to later medieval period. And specifically, according to Cunningham, these belong to 7th century AD. And according to Dr. Bharti Shote, who did her PhD, these belong to a varied range, wherein Khejaria Bhop belongs to 5th, 6th century AD. Pola Dungar belongs to 4th, 5th century AD till 7th century AD, and Dhamnar from 1st, 2nd century BC to 7th century AD. Now, all these caves have different features in terms of their excavation, in terms of their architecture. However, the 2 caves, that is Khejaria Bhop and Pola Dungar, that belong to Hinayana phase, I believe, in my conclusion, that they may belong to a much earlier phase. And the basis of this conclusion that I've drawn is based on certain inscriptions. So we get to find the inscription of Ushavadatta in Nasik. He was the son-in-law of Kshatrapa king, Western Kshatrapa king Nahapana, and he talks of donating quadrangular cells in Dashapura, that is Mandsaur, and these quadrangular cells could be Khejaria Bhop and Pola Dungar. However, at Khejaria Bhop, we do not find any stupa within the premises, and there is a much high possibility that the stupa was erected later. Again, a second inscription that mainly focuses or can be used as a source here is the inscription of. Okay. Aishijan, thank you for presenting your paper. Yes. Now I am call any one of you are not presenting at your paper in this session. Please present last chance. And now, if all of them is presenting your paper, I am called to me, Chairperson of this session, Professor Renu Shukla, Department of AISCA, Kanya Gurukul Campus, University, deemed to be University Haridwar, Uttarakhand. Please share your comments on the above presenter in this day 2 session. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Thank you. I am thankful to all the presenters and session coordinator for their patience and active participation, and my gratitude to the Heritage Society for having me here. Total 7 papers have been presented in this session. First paper was presented by Dr. Praveen Kumar, who is from Devi Lal University. His paper was on historical review of Kharkhoda district. He has presented an extensive exploration report of village-to-village survey of Kharkhoda, which is a southeastern part of Sonipat district of Haryana. He has discussed the geography, methodology, source material, cultural sequence, and also the material found in this region. He has mentioned number of things in this regard, and he has also mentioned that
In this cultural sequence, mature Harappan culture is not found. Paper was good and informative, so I congratulate him for his presentation. The second presentation was by Dr. K.K. Sharma. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. तो दूसरा प्रेजेंटेशन था डॉक्टर के शर्मा का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट की आर्कियोलॉजी के विषय में बात की। इन्होंने विलेज टू विलेज सर्वे के बेसिस पे बताया कि यहाँ पर बहुत फाइन क्वालिटी का पीजीडब्ल्यू है, हरप्पन साइट है, सनौली के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, विमेन वॉरियर्स की चर्चा की, एटिमोलॉजी की बात की और लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दोनों के बेसिस पे अपनी बात की। उनकी स्लाइड्स हम नहीं देख पाए, पर मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होंगी। सिनेरली खनन के बाद हम लोग जानते हैं कि बागपत रीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है और इससे जो मटेरियल हमको मिला है उसने एक नई इंसाइट हमको दी है। तो ये पेपर जो डॉक्टर के शर्मा के द्वारा प्रेजेंट किया गया काफ़ी अच्छा था और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इस क्षेत्र में इस कार्य की काफ़ी संभावनाएं हैं। थर्ड प्रेजेंटेशन वाज बाय देश दीपक वर्मा जी, हु इज़ अ रिसर्च स्कॉलर। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत दर्शन पर बात की है और उन्होंने भारतीय दर्शन के महत्व को बताते हुए आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की चर्चा की और शिक्षा दर्शन का उन्हें आधार कि किस आधार पर बात की गई है उसके बारे में उन्होंने बात की और बताया कि विवेकानंद ने किस तरह से शिक्षा को देखा है। और हम सब जानते हैं, जैसा उन्होंने कहा है, कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बात की, हालांकि बहुत जनरलाइज पेपर था, स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है इसमें और ज़्यादा। फोर्थ प्रेजेंटेशन जो था वो था डॉक्टर सोनिया जसरूटिया का। She has given an interesting insight into the excavated and explored sites of Kashmir region. And she has discussed about the story of the introduction of Buddhism in this region. And in this context, she has also mentioned Surendra, who has built 2 viharas here, Ashoka, who sent missionaries to this region, which was headed by Madhyantik. And she has also talked about Indo-Greeks, Kushanas, who were great propagator of Buddhism in this region. She has mentioned several Buddhist sites and structures. Some of these structures and sites are well known. Presentation was good, informative. And for fifth presentation was, just a minute, by Dr. Rajan Kumar Tripathi. डॉक्टर राजन कुमार त्रिपाठी ने बौद्ध शिक्षा परंपरा की बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से बौद्ध धर्म के उद्भव से पहले धर्म, समाज और शिक्षा की स्थिति थी और किस तरह के परिवर्तन बौद्ध धर्म के द्वारा उसमें लाए गए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने समानता की बात की, शांति की बात की, उसको आज के शिक्षा के संदर्भ में जो नई शिक्षा नीति है उससे भी उसे जोड़ने की बात की, बुद्ध की लोक कल्याणकारी भावनाओं की बात की। पर पेपर में जिन चीज़ों की चर्चा थी वो बहुत सामान्य बातें हैं जो सभी जानते हैं, तो उनको भी अपने पेपर में आगे ध्यान रखना होगा कि वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो और किसी नए पर्सपेक्टिव से उनके ऊपर बात करें। सिक्स्थ प्रेजेंटेशन वाज बाय विराग सोनटके. He has presented his paper on recent perspectives in megaliths of Vidarbha region. The paper was very good. He has discussed the distribution of megalithic sites excavated here. He has talked about the 6 districts these sites are concentrated in. He has mentioned different geographical patterns of the eastern and western part of Vanganga. And he has given a very minute and vivid description of these 2 distinct zones, A and B, of this region. He has talked about the western zone, which is zone A, and away from habitation sites, the only stone found is basalt. He has discussed about the skeleton remains, burial goods, and so many things. He has also talked about zone B, which is more diversified, rich in resources.
The presentation was very good, insightful analysis of megaliths of Vidarbha region of Maharashtra. So I congratulate him for his good presentation. Seventh presentation was by Ayushi Jain. This was the last presentation. Due to network issue, I couldn't listen to her properly, but she has given a glimpse of Buddhism in Kashmir region, and she has focused on 3 caves. Her paper was based on 3 caves of this region, Poladunga, Khejayamor, and Dhamor. And in this paper, she has discussed all her findings related to these three caves, and she has discussed she has focused, as she mentioned in her paper, that who has patronized these caves, and the date of these caves, and the political and cultural significance of these caves. So I think she wanted to talk about number of things and show her through her slides, but unfortunately we couldn't have that presentation due to some reasons, but I congratulate her. I am thankful to all the presenters for their patient hearing, and also thankful for making me a part of this event. So that's all from my side. Have a nice day. Thank you all. Thank you so much. Over to you, sir. Such a nice comments given by Chairperson Professor Renu Shukla in all the presenter. I am thankful to ma'am to join with us and provide such a good comments from the Siddharth University and Global Heritage Conclave. I am thankful to ma'am and all the presenter to present your in papers in this conclave, in this heritage conclave. Thanks one and all. Thank you. Thank you. Thank you all.